के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं. लेट्स सी, शुरू करते हैं फिर. चलो भाई शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट द मैच, लेट्स स्टार्ट द बुक. मैच कह रहे हैं. देखो तो कौन आया. कोई नहीं आया. गुड. Improve your family and life and relationship. The potential of your average person is like a huge ocean, unsailed, a new continent unexplored, a world of possibilities waiting to be released and channeled towards some great good. Brain Tracy. The quality of your family life and your relationship will determine most of your happiness or unhappiness. Your goals in this vital area of your personal life cannot be left to chance. Men and women are often different when it comes to their attitudes towards their relationship. Going back thousands of years, men were hunters, while women tended to herd and took care of the children. अब बेसिकली क्या बात कही है कि द क्वालिटी ऑफ योर फैमिली लाइफ एंड योर रिलेशनशिप विल डिटरमाइन मोस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस. मतलब जो भी आपकी फैमिली लाइफ है, रिलेशनशिप जो चल रहे हैं, वही आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस का कारण होती है. योर गोल इज टू वाइटल एरिया ऑफ योर पर्सनल लाइफ कैन नॉट बी लेफ्ट टू चांस. Men and women are often different when it comes to their attitude towards their relationships. Going back thousands of years, men were hunters while women tend to herd and took care of the children. Men derive their feeling from self-esteem to self-worth from demonstrating their proficiency as hunters. Having the ability to bring back game and provide for the families, a man's status in the tribe was determined by how good hunter he was in comparison with the other men. Jumped ahead to the 21st century and very little has changed. Men still achieve their primary source of value and self-esteem by demonstrating their ability to hunt, to earn a good living, and to provide for their families. Men still compare themselves with other men in terms of their hunting ability. They seek out and admire symbols of success that tell others that they're good hunters and providers, such as cars, clothes, expensive watches, homes, and other material objects. अब क्या होता है, men still compare themselves with other men in terms of their hunting ability. पहले क्या होता था कि लोग एक दूसरे को मतलब मारते थे ना, तब जाके आपस में मतलब अपनी एबिलिटी दिखाते हैं कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं इतना स्ट्रांग हूँ. और आज क्या होता है, आज हम लोग अपनी सक्सेस को दिखाते हैं. गुड हंटर्स जैसे पहले दिखाते थे, अब हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी, कपड़े, पहनावा, एक्सपेंसिव वॉचेस, होम्स, मटेरियल, कार, ये सारी चीज़ें दिखा के हम बताते हैं कि हम सुपीरियर हैं, जबकि ऐसा नहीं है. The more things change, women are different. जो women होती है वो different होती है. They largely base their success and happiness on the quality of their relationship, especially with their husband and children. They continually seek to do everything possible to improve and enhance the quality of their relationship and their home life. For most women, relationships are central. For both men and women, family and children are the most important factor in their life. Men, however, sometimes become so busy working to provide for their families that they lose sight of this fact. Women seldom do, because family and relationships are so important that to the mental, emotional, and physical health of everyone involved. Setting clear goals and making specific plans to ensure a high quality of family life is absolutely essential to long-term happiness and fulfillment of and satisfaction. Design your ideal family life and relationship. The 12-step process for setting and achieving any goals is perfectly applicable to designing a wonderful life with your family and with the help with the people in your most important relationships.
Have a desire what to do really want? Stand back and imagine that your family, life, and relationships were perfect in every way. What would they look like? How would your family life be different from what it is today? Imagine that you could wave a magic wand and create the perfect lifestyle with your family and relationships. What would it look like? If you are single and searching for exactly the right person for you, your soulmate, here is an exercise. Take a piece of paper and write out a list of everything you can think of that you would want in the perfect mate. Imagine that you are sending an order to a perfect mate factory and the factory is going to send you the exact person that you have described on paper. Be as detailed as possibly can. Write down every single positive element, factor, or ingredient that, based on your experience, your perfect person would have. Include age, education, health, appearance, values, sense of humor, experience in life, interests, likes, dislikes, family background, friends, hobbies, attitude, source, children, money, travel, and so on. बेसिकली आपको क्या है, डिज़ायर रखनी है. वॉट डू यू रियली वॉन्ट? आपको चाहिए क्या? Imagine that you are sending an order to a perfect mate factory. The factory is going to send you the exact person that you have described on paper. Be as detailed as you possibly can. Write down every single positive element, factor, or the ingredient that, based on the experience, for your perfect person would have. Include age, education, health, appearance, value, sense of humor, experience in life, interests, likes, dislikes, family background, friends, hobbies, attitudes towards children, money, travel, and so on. Develop clarity. When I recommend this exercise to my senior participants, many people react by suggesting that this is too cold and mechanical for finding true romance. On the contrary, I point out, making a list of all the factors that you want in the perfect person for you help you develop absolute clarity, a clarity that you may not have had before. It programs this ideal picture into your subconscious mind and activates your superconscious powers. By becoming absolutely clear on paper about the person you are really want, you set up a force field of energy in the universe that begins to attract this person into your life, sometimes in the most remarkable ways. Once upon a time, I did this exercise for myself. I wrote out a list of everything that I wanted in the perfect person for me. Sometime later, I met a young woman while I was talking courses at a local university, and she asked me how to find this perfect person for her. I gave her the same exercise. I told her to write out a list of all the factors she would want in a perfect person and just to trust the universe would bring the right person into her life at the right time. Some months later, we sat down and compared lists. We found that each of us was the ideal person for the other. अब उन्होंने क्या किया, बैठे और कंपेयर की लिस्ट. वी फाउंड दैट ईच ऑफ अस वाज दैट आइडियल पर्सन फॉर द अदर. Barbara and I have now been happily married for more than 30 years and have 4 grown children. मतलब एक दूसरों के लिए परफेक्ट ढूंढ रहे थे और खुद के लिए ही. अरे चैट देख लो. सॉरी सॉरी सॉरी. स्वागत है आपका रात के 11 बजे हमारे साथ बुक रीडिंग के लिए. आप और कैरी मिनाटी एक साथ लाइव क्यों आए? इधर तो देखो, तेरा ध्यान किधर है, तेरा सपोर्टर इधर है. चैट देखो. सॉरी सॉरी सॉरी. काफ़ी देर से कोई आया नहीं था ना, तो मैंने सोचा कि खुद ही पढ़ लेते हैं. ठीक है. सम मंथ्स लेटर वी सैट डाउन एंड कंपेयर्ड लिस्ट. तो कुछ टाइम उन्होंने बैठ के एक बार कंपेयर की लिस्ट और उनको आपस में ही पता चला कि उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है. ब्राउन मंडे कर ली है. तो फिर अब वो लोग हैप्पीली मैरिड हैं, उनके 4 बच्चे भी हैं. डज इट वर्क? इट वर्क फॉर अस. Here is the point. All it takes is a piece of paper and a few minutes of your time. Is this a worthwhile investment when you consider the possible consequences for your life? Of course it is. Transform your life. Countless people have come back to me over the years, very much in love and happily married, and told me that this exercise transformed their lives. Sometimes, after being alone for many months or even years, the perfect person for them walked into their life within 3 days of describing this perfect person on a piece of paper. Try it for yourself and see.
Encourage your friend to use this exercise as well. If it works, it can be the most profound of all life changing exercises. If you are currently married or in the relationship, stand back and imagine that you could have a magic wand and make it perfect in every way. How would it be different from what it is today? What would you be doing more of? What would you be doing less? What would you start doing that you are not doing today? क्या ऐसी चीज़ है जो आज आप नहीं कर रहे हो? What should you stop doing altogether if you wanted to, if you wanted your relationship to be very best it could possibly be? आपने रीड किया था ना, फोर ब्राउन किड्स, ऐसा कुछ सुनाई दिया? हाँ हाँ, नहीं, फोर ग्रोन चिल्ड्रन लिखा था, ब्राउन नहीं। आगे बढ़ते हैं। बिलीव यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव इट। आप जब उसे देखोगे तब आप उस पर बिलीव करोगे। तो आपको विजुअलाइज करना होगा ना, तो उस चीज़ को विजुअलाइज करो अपने दिमाग में ही, तभी तो बिलीव होगा। ये मच्छर गया मेरे हाथ से, मैंने इसे पकड़ा और ये उड़ गया, पर मर गया। अब आगे बढ़ते। Your belief about yourself and your relationship becomes your reality. These beliefs about the roles and responsibilities ties each person in a relationship go back to early childhood. They are shaped by your experiences throughout your life. They may or may not be based on the fact. Sometimes your belief about that should happen or should not happen in a relationship are not true at all. They are merely facts that you have picked up in some way that are not consistent with the reality of the other person. To be happy in the relationship, especially a marriage, your belief must be reasonable, achievable, and life enhancing, leading to the greater and greater happiness, and as well as being for each person the congruent with your highest values and principles. Timeless principles. The thousands of books and articles are devoted to subject of relationship, but the principle seems to be timeless. The foundation of a quality relationship is unconditional, positive acceptance of and regard for the other person. This means that you accept the other person exactly the way he or she is, with no attempt or desire to change that person's basic characters or personality. I am currently married to Naruto with the power of my conscious mind. क्या बात है, नारुतो की वाइफ है हिनाता ऑलरेडी, तो आप उससे शादी कैसे कर सकते हो? ये तो गलत बात है। आप तो उनके बीच में आ रहे हो, दरार डाल रहे हो उनके रिलेशनशिप में। हिनाता मार देगी आपको। Unconditional acceptance is the greatest gift that one person can give to another. In a loving relationship, you care more for the happiness and well being of the other person than you do for your own. Spouses who love each other and who love their children are willing to make any sacrifice to preserve and protect the other health and well being. The true measure of the health of a relationship is how much and often the people involved together, and how often, since laughter is outer expression of inner feeling of true happiness, it is the one measure that could be faked. Questions your belief. The starting point of the solving problem and difficulty in the relationship is often the questioning of your belief, especially your self-limiting beliefs. Good beliefs are life enhancing, bad beliefs are happiness destroying. If you do not experience happiness and joy in your relationships, it could be that your idea and belief about what is acceptable and unacceptable, right or wrong, and proper or improper about the relationship need to be examined and questioned. Always be willing to consider the possibility that you could be wrong. Write them down. Clarify your goals on paper. Write out a clear, present tense, positive personal description of your ideal life and lifestyle in detail, exactly as if were already perfect in every way. List each of the important people in your life and relationship, and then describe how your relationship with
those people would look and feel like if they were perfect in every way. ठीक है, अब क्या करना है, राइट देम डाउन, क्लैरिफाई योर गोल्स ऑन पेपर. अपने जो भी है आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं उनके बारे में लिखो उस पेपर में. मिडनाइट मच्छर वर्सेस अमन ऑन लाइफ. मैंने नारुतो शिपुडेन वाले नारुतो से शादी कर ली. हिनाता कैन हैव बरूटो वाला गंजा नारुतो. शिपुडेन वाला सबसे बेस्ट है. हाँ, शिपुडेन वाला नारुतो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. अब क्या कह रहा है ये, डिस्क्राइब योर आइडियल लाइफ स्टाइल. अपनी डिस्क्राइब करो अपने आइडियल लाइफ स्टाइल को. वॉट वुड योर लाइफ बी लाइक फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. क्या है आपकी मॉर्निंग से इवनिंग की लाइफ. फ्रॉम मंडे टू संडे, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, इफ़ यू वर लिविंग योर परफेक्ट लाइफ स्टाइल along with your family, what would you do together? How would you spend your time in evenings, on the weekends, on the vacations? Where would you go? What would you do when you got there? Imagine no limitations. If your life were perfect, where would you live? What kind of a home would have? What kind of material possessions would you want to provide for your family? What schools would you want your children to attend? What colleges would you want them to be able to afford? And what would you do to make this possible? What kind of clothes, cars, and possession would you want to make available to the members of your family? The very act writing down these factors on the paper increases your likelihood of achieving them. Remember, decide what's right before you decide what is possible. Decide what is ideal before you decide what is affordable. Best of all, sit down with your family and decide upon these factors together. Ask each person what he or she would want if your family life or relationship was perfect in every way. Write down all these goals and desires and use them as the basis of the organization of your family life. एनालाइज योर स्टार्टिंग पॉइंट. वेयर आर यू नाउ. अब आपको एनालाइज करना है आप कहाँ पर हो. कंडक्ट एन ऑनेस्ट एनालिसिस ऑफ योर करंट सिचुएशन. स्पीक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन योर फैमिली. Conduct and host analysis of your current situation. Speak to the most important people in your family and others. Relationship circles to find out how they think and how they affect your current situation. Some year ago, I began teaching an exercise to my seminar participants. I told them that they could change their life in only 4 ways. They could do more something of that were already doing. They could do less something they were doing that was not working well. They could start doing something brand new, something that they had never done before. They could stop doing certain things altogether. अब क्या होता है कि some years ago I began teaching an exercise to my seminar participant. अब उन्होंने अपने seminar participants के साथ कुछ exercise करना शुरू किया. I told them to they could change their life in 4 ways. अपनी लाइफ को वो लोग चेंज कर सकते हैं 4 वेज से. वो क्या वेज हैं? They could do more something of that they were already doing. जो आप कर रहे हो उसमें ही बेस्ट करो. They could do less of something they were doing that was not working well. They could start doing something brand new, something that they had never done before. They could stop doing certain things altogether. After asking my students to consider how these statements could apply to their lives, I suggest that they go home and ask the following questions of their family members. Is there anything that I am doing that you would like me to do more of? Is there anything else that I am doing that you would like to me do less of? Is there anything that I am not doing that you would like me to start doing? नारुतो की बात अलग ही है. हाँ, हम बड़े होके अनऑफिशियल शानिगान्स लेंगे, मतलब सब रिश्तों से जुड़े रहेंगे बट शादी नहीं करेंगे. प्यार व्यार सब मोह माया है. हिनाता कैन हैव बरूटो. ओके, नारुतो की बात ही अलग है. नारुतो यार बॉस है नारुतो. I suggest to my participants that if they had the courage to ask these questions, the answers that they would get would surprise them, and in some cases shock them. One evening, I decided to go home and practice this exercise with my wife and children. I was amazed at what they
told me, I immediately took action. And began following the recommendations. I did more of the things of some things and less of others. I started doing things that I hadn't been doing and stopped doing certain things altogether. It made a profound difference in my family. Try it yourself and see. Is there anything that I am doing that you would like me to do more of? ऐसी कोई चीज़ है जो कि मैं कर रहा हूँ और आप मुझसे चाहते हो कि मैं उसे ज़्यादा करूँ? कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो मैं कम करूँ? Is there anything that I am doing that you would like me to start doing? Is there anything I am doing that you would like me to stop doing altogether? Decide why you want the goal. What are the benefits you will enjoy? Make a list of all the benefits you would enjoy if your family life were perfect in every way. If everyone in your life was happy and fulfilled and you had ample financial resources, what kind of difference would it make in your life and in the life of each person in your family? Make a list of all the benefits that would flow to your family overall and to each person in a particular, especially write down how each person would feel about himself or herself, the family, and his or her personal potential. The more reasons you have for wanting to create an ideal family life, the more motivated and determined you will be, persistent until you succeed in achieving this goal. Set a deadline when do you want to achieve your goals? Once you have a clear idea of what you want and the reasons you want it, set clear deadlines for the achievement of each of your goals in your relationship and for your family. Some of these deadlines will be short term, even a single days, another will be longer term, taking months and years to fully reach. One of your goals should center on the specific amount of time your family spends together. This can include short term activities in the evening or weekends as well as shorter and longer vacations. In each case, these should be planned and scheduled well in advance, or you run the risk of putting them off when something more pressing comes up. With family vacation, we have always found it best to book them a year in advance and pay for them in full. Once you have paid for a family vacation, you virtually never neglect to take the vacation. जब आपने एक बार पूरा ही पे कर दिया फैमिली वेकेशन के लिए तो आप उसे वापस नहीं ले सकते. But you have not confirmed and paid in advance, there is always the temptation to put it off to a more convenient time. होता है ना, जब आपने अभी तक पैसे नहीं पे कर रखे होते तब आप करते हो चलो कल करेंगे परसों करेंगे. अरे आज का स्पेशल दवाई देख के क्या सोचे आप, वही जो आपने भेजा था वैसे ही सोचा मैंने भी. कीप डूइंग मिडनाइट लाइव स्ट्रीम. वैसे भी अभी नींद नहीं आती, 3 बजे के बाद ही महंगा नशा चढ़ जाता है 9 बजे तक. हाँ, कल मैं तो सुबह 5 बजे सोया था, 9 बजे उठा. फिर मैं भी 5 से 9 4 घंटा, फिर दिन में भी सोया 2 घंटा, 6 घंटे पूरे कर लिए. If your family goals involve material things such as moving to a larger home or different neighborhood, acquiring cars or computers for the member of the family, providing for education for your children, they should each be scheduled in advance and financial arrangement provided for. If you have children, you must look far into the future and make long-term goals. Some years ago, when my children were young, a friend of mine with 4 children about the same ages as mine asked me if my children were going to college. Of course, I assured him that they were. He then asked me if I had set aside the necessary monies to ensure that they could get the best college education that they could qualify for. My children were all under age of 10. I had to tell my friend, somewhat embarrassed, that I had not really thought about it. Providing for the college education was something that I was doing to do later. When I got around to it, he smiled and assured me that he personally had already set a fully funded trust fund to guarantee that his children could go to college, no matter what happened to him in the years ahead. That was all I need to hear. Within 5 years of my children had fully funded college and trust funds.
It was a valuable lesson. I subsequently learned that many families who neglected to provide for the children education were absolutely shocked when they learned how much 4 years of college was going to cost in the after tax dollars. Whatever you want to do with or for your family, don't put it off. Set a schedule and a deadline and begin making provisions for it as soon as possible. This can relieve an enormous amount of stress and tension later on and could become one of the smartest things you ever did. टू चिपकलीज फाइटिंग पॉपकॉर्न लाओ कोई पॉपकॉर्न लाओ अरे आज का मेरा स्पेशल दवाई देखा किस सोचे आप कहाँ है छिपकली यहाँ तो हम मच्छरों से ही लड़ रहे हैं ठीक है आज हमने कहाँ से शुरू किया पेज ओके तो हम लोगों ने पेज नंबर 132 से शुरू किया हम 141 में पहुंच गए हैं द रिस्क ऑफ पुटिंग देम ऑफ व्हेन समथिंग मोर pressing comes up. With family vacations, we have always found it best to book them a year in advance to pay them in full advance. हो चुका है. Determine the obstacles that you will have to overcome to create an ideal family life. जब आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है जो कि आपकी फैमिली की जो लाइफ चल रही है उसमें कोई बाधा डाल रहा है तो आपको उसे ओवरकम करना होगा. Why isn't your situation with your family and your lifestyles perfect already? What is stopping you or holding you back from creating the ideal lifestyle you desire? मतलब जो आपको लाइफस्टाइल चाहिए और वो आपकी फैमिली के साथ क्यों नहीं बैठ पा रहा है? क्या आप लेट उठ रहे हो? क्या आप लोग लेज़ी हो? घर में किसी की मदद नहीं करते? तो मैच कभी भी नहीं होगा. Look into yourself. Is there anything in yourself, your belief, ideas, attitudes that may be standing in your way, creating a happy, fulfilling, joyous family life? You look at the world around you. अपने आसपास लोगों को देखो. Is there anything in your external world, your job, your financial situation, and your possibilities that might be holding you back from creating a family life that you desire? अब क्या होता है कि आपकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन प्रॉब्लम है, क्या आपकी जॉब प्रॉब्लम है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो. What is the biggest single problem or difficult that stops you from creating your ideal family life? What could you do immediately to begin removing that difficulty or obstacle or alleviating the constraint? Perhaps the most important question you can ask to ensure peace and happiness in your family and relationship is what really important here. Many of the problem is marriages and children rearing come from losing perspective on what is really more important than anything else. Because of intensity of the emotions that arise in the family relationship and the role of the individual ego in wanting to be right to prevail in the family situation, it is easy to lose sight of fact that your most important overall goal is happiness and well-being of the people close to you. Whenever you get into the argument or disagreement of any kind, or whenever an important decision has to be made, remember to ask yourself, what's importance here? क्या वो important चीज़ है? Determine what knowledge or skills you will require to create the ideal family. मतलब क्या चीज़ है जो आप आइडियल फैमिली बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, कौन सी वो स्किल है, कौन सी वो नॉलेज है जो कि आप एक आइडियल फैमिली बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो. Remember to achieve something that you have never achieved before. You must become someone you have never been before. You must develop qualities, traits, and abilities that you may have never had before. At each stage of family formation, you must be open to learning new subjects and accepting new ideas. As your marriage develops, you must develop and grow as well. As your children grow and mature, you must sometimes adopt new ideas and attitudes to keep in the step with them, while holding on to your core values, sharing them with your kids. When members of your family become involved in certain activities that are important to them, you owe it to them to learn as much as you can about the new subjects so that you can keep up with them as they grow, mature, and develop in different areas and different directions. When our children were young, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, we decided to take up skiing as a family.
skiing as a family. We went to Bevier Creek in Colorado, and the whole family took ski lesson for a week. हमने क्या किया, एक प्लान किया कि हम जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उन्हें स्की सिखाएंगे, सब सीखेंगे. एवर सिंस देन वी हैव बीन एबल टू टेक ski vacation as a family in the United States of Canada. These have some of your happiest time together. How does a children spell the word love? The answer is time. हेलो अनीता जी, बड़े दिनों बाद. हाउ आर यू? मॉल कहाँ गया? मॉल पता नहीं कहाँ गया. एक ही कीड़ा है, बार बार मैं इससे नीचे गिरा हूँ, बार बार ऊपर चढ़ जा रहा है, बार बार ऊपर चढ़ जा रहा है. मतलब सीखो यार, इस कीड़े से ही सीख लो कि जितनी बार तुम उसे गिराओगे वो फिर ऊपर तक पहुँच जा रहा है. मतलब लाइफ में ऐसा ही है, जितना आप उठोगे उतना लोग नीचे गिराएंगे, फिर आप उठोगे फिर नीचे गिराएंगे. When my daughter Catherine decided that she wanted to ride horses, Barbara began studying the entire world of equestrian activities, eventually making herself an authority on the myriad of factors involved in buying and selling of horses, riding lessons, horse show, equipment, saddles, and countless factors involved in the area of competitive riding and jumping. This enabled both of us fully participate in Catherine's riding career. The only way to increase the value of deepen the quality of relationship is to invest more time in them. जब आप अपनी फैमिली के लिए या फिर कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप कुछ मतलब अच्छा रखना चाहते हो अपने रिलेशनशिप या फैमिली रिलेशनशिप्स को, तो टाइम देना ज़रूरी है. इफ़ यू डोंट गिव टाइम टू योर फैमिली तो दिक्कत हो जाएगी. The only way to increase value and deepen the quality of relationship is to invest more time in them. अगर आपको अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है तो इन्वेस्ट करो और टाइम. द मोर टाइम यू स्पेंड इन अ पर्सन, especially when that person is engaged in activities that are important to him or her, the deeper and richer the relationship becomes. अगर आप देख रहे हो वो किसी चीज़ में बिजी है तो आप उसको उसी में हेल्प करो, उसी में उसकी मदद करने की कोशिश करो, उसके साथ घुसो उस चीज़ में. And there is no other way. Determine and additional interpersonal qualities and skills you need to develop to realize your full potential as a spouse, partner, or parent. If you could wave a magic wand and become the perfect person in your relationship with the most important people in your family, how would you be described? Would people say that you had the qualities of kindness, patience, tolerance, empathy, compassion, friendliness? Would people say you were supportive, inspiring, motivating? Which of these qualities would you like to be known for? Aristotle said the way to develop a quality is to behave as if you already have had that quality in every situation where that quality is required. In other words, fake it until you make it. आजकल क्या होता है, सिंपल सा एक वर्ड याद रखो, फेक इट अंटिल यू मेक इट. हेलो मी गेमर, हेलो महेंद्र धोनी फैन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द चैनल. आज हम पढ़ रहे हैं इम्प्रूव योर फैमिली लाइफ एंड रिलेशनशिप. ये गोल का एक चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि अगर आपको अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, अपनी फैमिली के साथ आपको अच्छा रहना है, तो यू हैव टू गिव मोर टाइम टू देम, है ना. जितना भी आप काम कर रहे हो, जितने भी आप पढ़ाई कर रहे हो, बट आपको अपने फैमिली को भी टाइम देना है. अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो कुछ टाइम फैमिली को भी देना है. जो टाइम हम लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं उससे बढ़िया है मम्मी के साथ मदद कर दें, बैठ के बातें कर लें. परफेक्ट हो जाने से लाइफ बोरिंग हो जाएगी ना. सो नो, नहीं परफेक्ट तो कोई भी चीज़ कभी नहीं हो सकती एक्सेप्ट फॉर थॉमस एंड उबर कप. यस महेंद्र धोनी फैन, टुमारो बहुत ही बड़े मैचेस हैं. लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, प्रणव एचएस, सत्विक सराज, चिराग शेट्टी जी. मज़ा आ जाएगा यार. कल का दिन तो बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है. मैंने स्केड्यूल डाल दिया है, आई गेस आप लोगों ने देख लिया होगा. एक सेकेंड, लेट मी चेक. हाँ, 225 लोगों ने देख भी लिया है. गुड. एक्साइट फॉर थॉमस, महेंद्र धोनी फैन. यस, कल तो बहुत ही मज़ा आने वाला है यार. कल पूरी जान लगा देंगे इंडिया को सपोर्ट करने के लिए. अभी बस इंडिया और इंडोनेशिया और चाइना और कोरिया का ही वो आया है, ग्रुप सी के ही आए हैं ज़्यादातर. मलेशिया का नहीं आया अभी. कोई बात नहीं, मलेशिया के जितने भी बैडमिंटन लवर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा. कल 7:30 से मैचेस शुरू हैं. हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाएंगे आपको स्केड्यूल वगैरह बताने के लिए. व्हाट इज़ अ गुड पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग कॉलेज फ्रेश ईयर्स?
यू कैन डू जॉब इन मैकडोनल्ड्स, और मतलब आप किसी में भी कर सकते हो, मैकडोनल्ड्स में कर सकते हो, डोमिनोज में कर सकते हो। बेसिकली आपको क्या होता है कि एक सिस्टम कैसे काम करता है। इफ़ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर तो आप यहाँ कर सकते हो। बाकी अगर आपका फील्ड अगर आपका आर्ट में है तो आप लोग फीवर एक ऐप होती है, सॉरी वेबसाइट होती है, आप वहाँ पे अपनी स्किल्स बढ़ा के वहाँ पे फ्रीलांस भी काम कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यार डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। इन मॉडर्न वर्ल्ड एवरीवन इज बिजी इन देयर फोन इन डिफरेंट रूम्स, यस, बट वी हैव टू गिव टाइम टू योर फैमिली। मेरी फैमिली तो यहीं आके बात कर लेती है मुझसे। वैसे मैं मॉर्निंग से अभी आज फुल फैमिली के साथ ही था, क्योंकि अब 8-9 दिन तक हम लोग फैमिली से थोड़ा कम ही बात करेंगे, क्योंकि होता है ना। अब ये होगा कि बीच में अगर 1 घंटे का टाइम मुझे मिलता है, जैसे विशाल भाई करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग, तब मैं 1 घंटा कुछ घर के लिए कर दूंगा, या घर में मॉम के साथ बैठ के खाना वाना खा लूँगा, तो ये चीज़ होगी। बट मैचेस के बीच में हम लोग घर वालों को टाइम नहीं दे पाते, किसी को भी टाइम नहीं दे पाते। आप देखते हो कि जैसे ही हम लोग अगर पहाड़ी बिजनेस पे फुल डे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो रात को हम लोग के पास जो टाइम होता है उसमें थक के सो जाते हैं, या फिर नेक्स्ट डे के लिए जो शेड्यूल्ड वीडियो होती है वो बनाते हैं। पर चलो, थॉमस कप एंड ऊबर कप एक बहुत ही बड़ा वो है, मानकर चलो टूर्नामेंट, जिसमें सारी टीम्स खेलेंगी और हम ज़रूर जीतेंगे। हेलो मोनिल गठालिया, कैसे हो? व्हाट इज़ अ गुड जॉब? ठीक है, अब हम कहाँ थे? By practicing qualities such as alternativeness, caring, patience, warmth, and kindness, whenever those qualities are required, you eventually program them into your personality until they become automatic ways of responding whenever they are needed. Make a plan, involve everyone in your family and relationship in your goal setting. अब क्या है कि एक प्लान बनाओ, उसमें अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर दो। रिलेशनशिप इन योर गोल सेटिंग, रिलेशनशिप को सेट कर लो अपनी गोल सेटिंग में। फाइंड आउट व्हाट द पीपल क्लोज टू यू वांट, नीड एंड आर विलिंग टू वर्क टूवर्ड्स। कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस ओपन। आस्क देम टू देयर इनपुट एंड आइडियाज एंड लिसन इंटेंटली to them when they want to talk. Identify the people outside your immediate family circle whose help and cooperation you will require for you to be able to create your ideal family lifestyle. Often your immediate relative, parents, brothers, sisters, and others can have a tremendous influence on what you can accomplish with your family. To create a roadmap to relationship success, make a list of every single thing that you can think of doing to achieve an ideal family relationship lifestyle. List the things that you would like to acquire for your family, the places you would like to go, the subjects that you would like to learn, and the vacations that you would like to take. Organize your list by sequence, by what you do, what you need to do before you do something else. Organize your list by priority, by what is more important एंड वॉट इज़ लेस इंपॉर्टेंट। आपको देखना होगा क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ कम इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइज, इमेजिन योर फैमिली लाइफ वॉज परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट। आपको विजुअलाइज करना होगा कि क्या BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन करके है। BWF को मेरे हिसाब से बैडमिंटन वर्ल्ड एसोसिएशन मतलब वही फेडरेशन है BWF, हाँ वही है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ही है। स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी, एक स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है BWF, ब्लैक एंड वाइट फिल्म। My parents' anniversary next week. What should I give them? You should give them. अब पता है क्या करो, आप उन्हें मूवी दिखाने ले जाओ, मूवी दिखाने ले जाओ उनको। एक परफेक्ट मतलब एक फैमिली आउटिंग करो, और बताओ मत, सीधा बुक करवा दो टिकट्स उनके हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, और रात को डिनर करके आना। और बाकी अगर आपको कुछ गिफ्ट देना है तो आप दे सकते हो, एक कोलाज बना के दे सकते हो, एक फ़ोटो फ्रेम बना के दे सकते हो पूरी फैमिली का। दैट इज़ अ गुड आइडिया। महेंद्र धोनी फ़ैन, पहले तो अपने पेरेंट्स को मूवी दिखाने ले जाओ या फिर कहीं डिनर पे ले जाओ, दोनों में से एक कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद आप उन्हें एक फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट करो जिसमें आपकी पूरी फैमिली की फ़ोटो, अच्छा लगेगा। दैट इज़ अ वेरी गुड गिफ्ट यू कैन। आई एम गोइंग फॉर अ डिनर फॉर श्योर। ओके, ये ठीक है। मूवी दिखाने ले जा सकते हो, वो आपके ऊपर है, अगर मूवी देखना आपकी फैमिली को पसंद है तो। नहीं तो आप उन्हें डिनर तो ले जा ही रहे हो, और एक फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट करो, बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब वो यादें होती है ना, उसे अच्छे से फ्रेम करवाना, जैसे इस टाइप का होता है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ माई चाइल्डहुड हीरो,
नारुतो, जैसे ये फ्रेम हो रखा है ना, वैसे ही अपनी फैमिली के लिए आप फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे फ्रेम करवा सकते हो। ओके, आई गिव देम अ कोलाज लास्ट टाइम। ओके, दे चुके हो। यू कैन गिफ्ट, अगर बजट है तो आप वो भी गिफ्ट कर सकते हो। कपल वॉचेस आती है ना, कपल वॉचेस, दे फील गुड। और पता है, जब वो आप उन्हें डिनर करवाने ले जाओ तो आप उन्हें वो पहले ही गिफ्ट कर देना। कपल वॉचेस भी अच्छा आइडिया है। कपल वॉचेस आती है ना, अफोर्डेबल भी है और अच्छा भी लगता है। दोनों सेम सेम वॉच पहन के बाहर जा रहे हैं, इट लुक नाइस। बाकी वो आपकी नीड है। या तो फिटनेस वॉच गिफ्ट कर दो दोनों को, फिटनेस वॉच, बिकॉज फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मॉम एंड डैड। आई नो उनको पसंद नहीं है, पसंद हो ना हो, पर आप फिटनेस वॉच गिफ्ट कर सकते हो। आई गेस आपको पड़ेगी पर हेड 1000-2000, अगर रेड एम आई का बैंड लोगे तो फिटनेस वॉच गिफ्ट कर दो, क्योंकि वो लोग अपने वॉक का ना, वॉक करते हुए ट्रैक कर सकते हैं। बेसिकली स्टेप्स तो काउंट कर सकते हैं ना, कि हाँ अगर ज़्यादा एडवांस नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल जो एम आई बैंड्स होते हैं वो आपके वॉक जो कितना स्टेप्स को काउंट कर लेते हैं, तो आंटी अंकल को आइडिया रहेगा कि वो दिन में कितना चल रहा है, तो उससे उनकी हेल्थ पे भी मतलब अच्छा इफेक्ट रहेगा। क्योंकि अगर मॉम एंड डैड हेल्दी रहेंगे तो ऑब्वियसली घर में सब ठीक रहेगा, है ना। तो इट्स अ नाइस आइडिया, यू कैन गिव देम फिटनेस वॉच। मैंने भी मॉम को उनके बर्थडे पे एक बार फिटनेस वॉच दिया था, और शिवान दीदी चला रही है अभी उसे। वेलकम वेलकम महेंद्र धोनी फैन, कोई बात नहीं, हम सब भाई तो हैं। आंटी अंकल की एनिवर्सरी है और हम लोग गिफ्ट सजेस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस आंटी एंड अंकल को कि उनकी एनिवर्सरी आ रही है, बहुत अच्छे से रहा सब कुछ, और आई होप कि आप लोग अच्छे से मनाओ और आंटी अंकल को और स्पेशल फील कराओ। Create a clear mental image of your ideal home and lifestyle. See yourself living and enjoying a wonderful life with the people who are most important to you. Play this happy picture over and over on the screen of your mind and imagine how would you feel if you were living the life of your dream. अगर सोचो कि आप अपनी लाइफ का बेस्ट ड्रीम जी रहे हो, वो भी उन लोगों के साथ जिनके साथ आप जीना चाहते हो। Once you have a goal and a plan, have visualized your goal clearly and have discussed it with the members of your family, take action immediately. Action लो तुरंत, do something, do anything, demonstrate your commitment to creating a wonderful life for yourself and the family and the people around you by doing something that makes it clear that this goal is going to be a part of your further future. मतलब कुछ भी करो, कुछ भी करो, अपने आसपास वाले लोगों को यकीन दिलाओ that you believe in your goals, that you believe that you want a perfect life. और 12th रूल इज नेवर गिव अप। द की टू सक्सेस इन बिल्डिंग अ वंडरफुल लाइफस्टाइल, family lifestyle is simple. Get going and keep going. Make a decision in advance that you will persist through the inevitable ups and downs you will face until you have created an ideal lifestyle for yourself and for the people around you. अब क्या है कि आपको डिसीजन लेना होगा इन एडवांस, पहले से डिसीजन ले लो दैट यू विल persist थ्रू इनएविटेबल्स अप एंड डाउन्स। चाहे ज़िंदगी में कितने भी अप एंड डाउन्स आए, आपको डिसीजन पहले ही लेना है कि मैं वो चीज़ करके दिखाऊंगा, चाहे मैं फेल हो जाऊं, कुछ भी हो जाए। नेवर गिव अप एटीट्यूड रख के काम करते जाना है। एज एन एरिया ऑफ लाइफ, द बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रिक्वायर्स पेशेंस, परसिस्टेंस एंड foresight. The process is fraught with difficulties, setbacks, challenges, and adversity. At the time, the building and maintaining of wonderful, high-quality relationship offer the greatest and most meaningful happiness and joy that are possible in life. ठीक है। इम्प्रूव योर फैमिली लाइफ एंड रिलेशनशिप, तो इसके 7 पॉइंट्स है, पढ़ लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। इमेजिन दैट यू कुड हैव अ मैजिक वॉन्ड एंड क्रिएट अ परफेक्ट फैमिली लाइफ। ठीक है, आपके पास एक मैजिक वॉन्ड है, आप उसे घुमाओगे और आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, ऐसा सोचो। हाउ वुड इट बी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट इज़ टुडे, क्या चीज़ डिफरेंट हो जाएगी जो आज है उससे। Look back over your life and identify your happiest moment with your family and other people that were you doing. What one goal would you set for your family life if you were guaranteed of success?
वॉट डू यू नीड टू डू मोर ऑफ टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, ऐसी क्या चीज़ है कि आप करोगे और वो इम्प्रूव हो जाएगा. वॉट डू यू नीड टू डू लेस ऑफ टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स. वॉट डू यू स्टार्ट डूइंग दैट यू आर नॉट डूइंग टूडे टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप. आप आज ऐसी क्या चीज़ कर रहे हो जो जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव नहीं हो रहा है, और आपको क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो. वॉट शुड यू स्टॉप डूइंग टू ऑल टुगेदर, क्या चीज़ है जो आप सब नहीं कर रहे हो. अब हम पढ़ेंगे 12th ऑप्टिमाइज योर हेल्थ वेलनेस. एक सेकेंड. सो दिस इज द 12th चैप्टर, और ये छोटा ही चैप्टर है. आई होप इसे हम 15 मिनट के अंदर ख़त्म कर लें. ठीक है. एक सेकेंड गाइस. आगे बढ़ते हैं. 15 मिनट में हमें ये चैप्टर ख़त्म करना है. वो कैसे करेंगे वो हम नहीं जानते, बट अच्छे से पढ़ पढ़ के इसे कंप्लीट करेंगे. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ऑप्टिमाइज योर हेल्थ एंड वेलनेस. अपनी हेल्थ और वेलनेस को आपको इम्प्रूव करना है, उसे मॉनिटर करना है. द वीकेस्ट लिविंग क्रीचर बाय कंसंट्रेटिंग हिज पावर ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट कैन अकम्प्लिश समथिंग. कोई भी इस दुनिया में आया है, कोई भी कितना भी वीक हो, अगर आपने अपने फोकस को एक जगह पे रख दिया, यू कैन अचीव अ गुड थिंग इन योर लाइफ. द स्ट्रॉन्गेस्ट बाय द डिस्पर्सिंग हिज ओवर मैनी फेल टू अकम्प्लिश एनीथिंग. The weakest living creature, by concentrating his power on a single object, can accomplish something. The strongest, by dispersing his over many, may fail to accomplish anything. अब क्या होता है, ये कितनी अच्छी बात है. I will take a screenshot. Wait a second. एक सेकेंड. किसी भी एक चीज़ के पीछे पड़ जाओ और उसके पीछे जान दे दो, मतलब इतना इतना ध्यान दो. The weakest living creature, by concentrating his power on a single object, can accomplish something. The strongest, by dispersing his over many, may fail to accomplish anything. जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो वो चाहे 10 चीज़ों में हाथ डाल दे तब भी वो फ़ायदा नहीं कमा सकता. एक कमज़ोर आदमी जब एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे भी फोकस कर दे तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है. द गोल शुड बी टू इन्जॉय हाई लेवल ऑफ हेल्थ. गोल ऐसा होना चाहिए आपको, हाई लेवल ऑफ हेल्थ, फिटनेस एंड एनर्जी, टू फील टेरिफिक अबाउट योर सेल्फ and to feel a long, happy, painful, free life. Fortunately, in the 21st century, much of what you accomplish or fail to accomplish with your health is under your control. The lifestyle habits you form and decisions you make can have an enormous impact on the quality of your life and how long it lasts. But very little happens by chance. And this is especially true in regard to your health and fitness, as just you cannot expect your finances and your relationships to take care of themselves without your active interventions. You cannot expect to enjoy superb level of health and fitness without your active involvement and participation every day of your life. Get into the zone.
In the 1990s, Sears wrote an excellent book on nutrition called The Zone. In the book, he explained how your body is like a factory, how every food you eat is like a chemical that goes into the production process of the factory. By changing the food chemical, you can change the process and result. The zone teaches you how to eat a healthier way so that you maintain high level of energy, simultaneously lose weight. At the end of the book, Sears answers frequently asked questions from readers on living and eating in the zone. One of the questions I especially liked was from someone who wrote, "What if you fall off the wagon and you eat a large meal with dessert? Eat too much as people do over the holiday season." अब क्या होता है, लोग क्या करते हैं, हॉलीडे के टाइम पे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं. सोचो कि अगर आप कभी किसी ट्रक से गिर जाओ, ट्रक नहीं, चलो बैलगाड़ी से गिर जाओ, पेट भरा हुआ हो और डेजर्ट भी खा रखा हो और गिरोगे तो क्या होगा, सोचो. Barry Swear's answer is a classic. Always remember that no matter what you have eaten in the past, you are only one meal out of the zone. आपने पुरानी ज़िंदगी में कुछ भी खाया हो, मतलब मतलब आपने अभी थोड़ी देर पहले कुछ भी खाया हो, यू आर ओनली वन मील आउट ऑफ द जोन. आप अपने मील से एक ज़्यादा ही खा चुके हो, ये समझ लो. यू मे हैव एंगेज इन health habits that were not good for you in the past, but at any time you can make a decision to change. You can decide at this very moment that from now on you are going to eat the right food, drink the right liquids, get the power exercise, and get ample amounts of sleep. At any moment you are free to choose going forward to live a healthy life, and it's up to you. ठीक है. You are responsible. आप responsible है मेरे दोस्त. You are responsible. Some experts today feel that most illness that shortens your life are either the result of poor habits of nutrition and exercise, of psychomatic in origin. For psycho, the mind makes soma. The body is sick. You may not be able to control all the factors that influence your health and well-being, but you can have considerably control over the most of them. The starting point of achieving ideals level of health and fitness is for you to make a decision to get into the best physical condition of your life, and then to maintain that level of physical conditions and well-being identify indefinitely. Without the kind of firm decision, nothing happens. But if you make this kind of decision and stick to it, virtually everything is possible. अब क्या होता है कि आपको अपना देखना पड़ेगा, क्या आप खा रहे हो, क्या आप पी रहे हो, क्या आप कर रहे हो, क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा अगर आप अपनी हेल्थ को देखना चाहते हो. बाय, गुड नाइट, इट्स अर्ली वेकअप टुडे. ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस ड्रीम, सो जाओ, टेक केयर. एंड 12 सेटअप प्रोग्राम, अब क्या है 12 स्टेप प्रोग्राम क्या है, फिर से कोई 12 प्रोग्राम ले आए. Here are 12 steps that you can follow to set and achieve your health and fitness goal. अब आपको देखो, अभी क्या हो रहा है कि मैं भी थोड़ा सा फिटनेस की तरफ कम हो गया हूँ. मतलब अभी मुझे जाना है, बट मॉम ने अभी कहा है कि कुछ वीक्स रुक जा, फिर साथ चलेंगे. अभी रुक जाओ क्योंकि अभी मॉम के भी कुछ काम बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं, तो अभी हम लोग अपने काम वगैरह निपटा रहे हैं. तो पहले तो मुझे बता दो, डू यू वांट ट्रैवल व्लॉग्स? So I'm giving you a poll, please click on that. Do you want a travel vlog or not? देखते हैं. Have a desire, how badly do you want it? पहले अपना डिज़ायर देखना है, कितना बैडली आप वो चाहते हो. What do you really want for yourself in terms of health and fitness? क्या चाहते हो आप अपने लिए हेल्थ और फिटनेस के लिए? Your intense desire to enjoy high level of physical well-being is essential starting point of superb health. If you want it long enough and hard enough, nothing can stop you from eventually achieving the state of excellent all around health. Imagine that you could wave a magic wand and enjoy perfect physical health in every way. What would you look like? How would you feel? How much would you weigh? How would your physical body be different from what it is today? What changes would you have to make in your lifestyle and your health habits to enjoy superb levels of health and energy?
Clarity is essential. The greater clarity you have with regard to the person you want to be, the lifestyle you want to enjoy, the easier it is make the necessary decision and take the necessary action to make those goals a reality. Believe, you must absolutely believe that superb physical health is possible for you. No matter what you have done or failed to do in the past, you must believe that what others have achieved in terms of physical fitness, within no reason you can achieve as well, no matter how you have been overweight or unfit at one time in your life. Your weight was ideal and your level of fitness was superb. It may have been a long time ago, but what you have done in the past, you can certainly repeat again in the future. Many people are convinced that their level of fitness or unfitness is largely fixed. They have been this way for so many years that they cannot imagine changing. Sometimes they attribute it to their genetic inheritance or to their glands. They justify and rationalize being unable to make any real changes. अब क्या होता है, many people convinced to their level of fitness or unfitness is largely fixed. They have been this way for so many years that they cannot imagine changing. अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग अगर जैसे मोटे होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि अब मैं इतने साल में एक्सरसाइज नहीं की, अब क्या कर लूँगा. समटाइम्स दे एट्रीब्यूट इट टू देयर जेनेटिक इनहेरिटेंस और देयर ग्लैंड्स. कभी कभी उन्हें जेनेटिक प्रॉब्लम होती है कि वो मोटे हो जाते हैं. ठीक है, थोड़ा सा खाते हैं मोटे हो जाते हैं. दे जस्टिफाई एंड रैशनलाइज बीइंग अनएबल टू मेक एनी रियल चेंजेस. तो वो लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते और रैशनलाइज नहीं कर पाते और वो चेंजेस भी नहीं बना पाते अपनी बॉडी में. मोटिवेशन और एबिलिटी. क्या है मोटिवेशन और क्या है एबिलिटी? But imagine that someone offered you $1 million cash if you would become superbly healthy, fit and trim over the next 12 months. अगर आपको मैंने बहुत $1 million दे दिए और बोला कि आप पतले होके दिखाओ 12 महीने में, तो कौन पतला नहीं हो के दिखा सकता? And the person offering you the $1 million would also pay for personal trainer. और वो $1 million के बाद आपको पर्सनल ट्रेनर्स भी दे रहा है, प्रोफेशनल शेफ भी दे रहा है, फिटनेस क्लब मेंबरशिप दे रहा है, exercise equipment to help you achieve your goals. Under those conditions, with the $1 million prize hanging in the balance, could you alter your health habits and achieve your physical goals? If the answer is yes, then we are not talking about a lack of ability but rather a lack of motivation. तो ठीक है, अगर आप $1 million में अपनी फिटनेस के लिए फिट होने के तैयार हो तो ये लैक ऑफ मोटिवेशन है. ठीक है, इसको लैक ऑफ मोटिवेशन बोलिए कि आपको मतलब मोटिवेशन दोगे तभी काम करोगे, पैसा दोगे तभी काम करोगे. What you are saying is that if the motivation was high enough, you could change whatever health habits or behavior you need to achieve a particular fitness goal. The question is not whether you are capable of achieving a superb level of fitness. The only question is how badly you want it. अब देखो, ये क्वेश्चन नहीं है कि आपका वो गोल अचीव होगा कि नहीं होगा. आपका ये है कि आप उस गोल को कितना जल्दी अचीव करना चाहते हो, कितना आप उसे समय देना चाहते हो, वो आपके ऊपर है. होता है ना, कुछ लोग होता है स्विमिंग एक हफ्ते में सीख जाते, कोई 2-3 साल में नहीं सीख पाता. तो दैट इज़ द सिंपल क्वेश्चन, हाउ बैडली डू यू वांट इट. मतलब आप कितना बुरी तरीके से सीखना चाहते हो, मतलब कितनी जल्दी सीखना चाहते हो. अब हम टाइम देख लेते हैं, 2 मिनट बचे हैं. आई गेस 151 पेज तो ख़त्म हो ही जाएगा. द राइट स्टिमुलस. I had a close friend who was overweight for many years. He always had a reason or excuse for not being able to lose the weight. Then one day he had a heart attack. Oh my god. तो उसका दोस्त था, वो वेट कम नहीं कर पाया और एक दिन उसे हार्ट अटैक आ गया. When he woke up, his doctor told him that if he did not lose 50 pounds in the next 6 months, he would not live out the year. With that threat hanging over his head, my friend immediately changed his diet, stopped eating all the unhealthy foods, began exercising every day, and lost more of the 50 pounds. Over the next 6 months, he never gained it back. The possibility of dying was a sufficient motivator to overcome years of bad habits and excuses. Your success or failure, especially in the area of health and fitness, is largely determined by the habits. Healthy people have got good health habits, and unhealthy people have poor health habits. As Ed Forman, the motivational speaker, once said, bad habits are easy to form. अब क्या होता है, ख़राब चीज़ें हम जल्दी सीख लेते हैं, but hard to live with. पर उन ख़राब आदतों के साथ हम मतलब अब गाली देना तो हम लोग तुरंत सीख जाते हैं, बट उसके साथ जी नहीं सकते.
घर में बैठ के गालियाँ दे नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा उन गलत आदतों को सीख कर जो कि आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ नहीं कर सकते, है ना। बट हार्ड टू लिव विद इट। गुड हैबिट्स आर हार्ड टू फॉर्म। जो अच्छी आदतें होती है वो बहुत ही मुश्किल से बनाई जाती है, बट ईजी टू लिव विद, और उन अच्छी आदतों के साथ आप बहुत ईजिली जी सकते हो। The most important belief you can develop for your physical well-being is that you have the willpower right now to develop any healthy habit that you need to enjoy superb level of health and fitness for the rest of your life। तो मेन चीज़ है कि आपको अपने अंदर विल पावर लानी होगी कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। मैं आज 10 पुशअप्स मार सकता हूँ, मैं आज आपको स्क्वाट्स मार सकता हूँ, और मैं अपनी हेल्थ को फिट रख सकता हूँ। राइट इट डाउन, program it into your subconscious mind. Write out a clear specific description of your ideal physical self in every aspect. Be clear about the amount that you intend to weigh, your ideal waist size, the number of minutes and hours that you intend to exercise each day and each week, and every other aspect of your level of physical well-being. ठीक है, द टाइम इज़ ओवर गाइज। 1 घंटा 40 सेकेंड हो चुकी, 40 मिनट कह रहा हूँ। तो थैंक्स अलॉट गाइज, मज़ा आया आज आपके साथ बुक पढ़ के। समय का पता नहीं चलता, बुक भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। सो अभी 20 चैप्टर्स हैं और अभी हम लोग आई गेस 12th चैप्टर में हैं, जिसमें ये हमें बता रहा है कैसे आपको अपनी ऑप्टिमाइज़ को, मतलब हेल्थ को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है और वेलनेस को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। तो बेसिकली वही है कि अगर कोई हमें 1 लाख रुपए दे तो हम तो भाई तुरंत अभी 6 पैक्स निकालने को रेडी हो जाएंगे, बट अगर कोई पैसे ना दे हम कहेंगे छोड़ो यार क्या है, सो जाओ, है ना। तो वही चीज़ है, यू हैव टू इंक्रीज योर विल पावर। अपनी विल पावर को इंक्रीज करो, तभी हम लोग फिट रह पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं थॉमस कप एंड ओवर कप में।